Wow, the post-lunch session, the graveyard shift is always tough. While I think the high fives helped, let me start off with a quick question, right? How many of us watch YouTube in this room? Wow, don't see all of the hands, but I'll assume the ones not raising their hands had a heavy lunch. Okay, now how much of the content that you watch is exclusively in English? Now that's where the crux is, right? I only saw a couple of hands floating up there, which means that the majority of the users in this room are not really watching content in English, right? Which means ज़्यादातर content Hindi में हो रहा है या whatever your mother tongue is, right? And in that space is one of the most interesting startups operating. Cuckoo FM, whose CEO and founder, Mr. Bisu, has joined us, right? So without much ado, I will jump straight into it, right? Bisu, you've been into this entrepreneurship game right since you came out of college, what, in 2012? Yes. Can you tell us what got you started and what keeps you motivated enough to keep at it? So, I am from the first batch of IIT Jodhpur. I don't have any seniors in the college. I was the first one to start the company from the college. So that was a difficult decision. Everyone was looking for the job. And I was the one who wanted to do something unique, something adventurous. So I finally decided that I will start a company. I decided that I will create a product that will be useful for Bharat audience. So I started an education company, and I started because I had the most exposure at that time in the education actually. So I connected the dots from the beginning. Actually, I am from a village in Rajasthan. So like शुरुआत का education पूरा राजस्थान में हुआ. And in village we used to speak in Marwadi और हिंदी के अंदर पढ़ते थे. Then in 11th 12th I came to Sikar, that is a city in Rajasthan. उसमें that was the first time I started speaking in Hindi. और 11th 12th के बाद I joined IIT Jodhpur. That was the first time I started studying in English. So in most of the classes was in English. So I connected the dots कि यार पूरा भारत 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को इंग्लिश नहीं आती है. लाइक दे स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज, दे राइट देयर नेटिव लैंग्वेज, दे कंज्यूम देयर कंटेंट इन देयर नेटिव लैंग्वेज. और जो टॉप 100 मिलियन है जिसको इंग्लिश आती है वही केवल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. और अगर आप कंटेंट देखते हो पूरा 99% कंटेंट इज इन इंग्लिश, और मोस्टली उसको ट्रांसलेट करते हैं बाकी लैंग्वेज में कंज्यूम करने के लिए. सो इन कॉलेज आई कनेक्टेड डॉट्स कि यार like we should improve the quality of the education, क्योंकि like rural के अंदर तो quality है ही नहीं. So I choose that method कि यार internet के through करते हैं because you can control the distribution. So I started a company in 2012 in Jodhpur actually. और actually पूरा एकदम tier 3 tier 4 के लिए education at that time. In 2015 we got acquired by Topper. That is one, like at that time that was the biggest education company. So that was my like start in the entrepreneurship journey. Wow, एक successful exit already था आपके पास before Cuckoo FM. आपने तो vernacular identification की तो story हो गई है, right? On why vernacular content, why audio? मतलब आपके पास YouTube भी हो सकता है. I think कुछ content spaces हैं जो कि एंड सोशल मीडिया भी उसी टाइम पिक अप कर रहा था 2015-16 में, जब 4G पॉपुलराइज हुआ, जियो पॉपुलराइज किया इंटरनेट, और गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा. ऑडियो ही आपने क्यों पकड़ा? ओके, तो आफ्टर माय फर्स्ट कंपनी आई स्टार्टेड वर्किंग इन टॉपर, और एक्चुअली आई एट द सेम टाइम आई डिसाइडेड दैट आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट वेंचर. तो फ्रॉम दैट डे आई वाज एक्सप्लोरिंग द आइडियाज़ कि यार नेक्स्ट क्या करना चाहिए. और आई डिसाइडेड सम हाई लेवल क्राइटेरियाज कि यार
अब तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी था. इन 2015 आई गॉट एक्वायर्ड. तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस कि यार नेक्स्ट कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो फर्स्ट वाज सेम कि यार मेरे को मास प्रोडक्ट ही बनाना है और भारत के लिए ही बनाना है. एंड सेकेंड क्राइटेरिया वाज कि यार मेरे को कुछ ऐसा बनाना है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ. आई शुड बी द यूजर ऑफ दैट प्रोडक्ट. आई शुड बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ एंड दैट सॉल्यूशन शुड स्केल टू मिलियंस ऑफ लाइफ. एंड थर्ड क्राइटेरिया जो लाइक मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट था कि यार छोटी टीम में काम करना है. आई विल नॉट मेक एनीथिंग दैट इज ऑपरेशनली हैवी. तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आइडियाज़. इन 2016 वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी पॉडकास्ट. उससे पहले मैंने कभी ऑडियो में नॉन म्यूजिक कंटेंट सुना ही नहीं था. लाइक मोस्टली म्यूजिक ही सुनते थे एंड देन वी यूज टू वॉच मूवीज और ये सारे कंटेंट कंज्यूम करते थे. एंड दैट वाज इंग्लिश पॉडकास्ट, यूएस पॉडकास्ट. I think some of you know Joe Rogan, Naval Ravikant. That was the content. वो 3 hour का podcast था. I listened. That was my first content. वो इतना awesome था कि I got hooked to that like audio content. Then I started consuming other content, other startup world content, and then I connected the dots. क्या this is some different kind of content. आज तक मैंने जो consume किया है ना वो थोड़ा अलग टाइप के content है. So there are 3 kind of content. One is text, एक वीडियो होता है, एक ऑडियो होता है. टेक्स्ट और वीडियो के जब कंज्यूम करते हो तो आपको बैठ के ही कंज्यूम कर सकते हो. लाइक आप बुक पढ़ रहे हो वो करते टाइम नहीं पढ़ सकते. वीडियो भी कंज्यूम करो तो यू हैव टू फिजिकली लाइक सिट डाउन एंड वॉच द वीडियो. तो बोथ द कंटेंट फिजिकली रेस्ट्रिक्ट यू. ऑडियो गिव्स यू फिजिकल फ्रीडम. लाइक आप चलते फिरते एक्सरसाइज करते कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, आंख बंद कर रेस्ट कर रहे हो. बहुत सारे यूज केस हैं. सो आई कनेक्टेड दोज डॉट्स. यार एवरीवन स्पेंड 8 to 10 hours इन दैट टाइम जोन. लाइक कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो उस टाइम जोन में स्पेंड टाइम नहीं निकालता. जैसे कम्यूट कर रहा हो, रिपीटेटिव टास्क कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो. एंड वी आर ब्लैक होल फॉर कंटेंट. वी वांट टू कंज्यूम कंटेंट मोर एंड मोर. और तो आई टॉक टू सम अदर यूजर्स कि यार आप उस टाइम जोन को कैसे देखते हो. मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर दैट दे फील फ्रस्ट्रेटेड इन दैट टाइम. जो वो जल्दी से जल्दी वापस स्क्रीन पे आना चाहते. दे फील कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं. अगर कोई 2 घंटे कम्यूट में टाइम स्पेंड कर रहा है, दे फील कि आई एम वेस्टिंग द टाइम. Then I connected the dots. If I can provide something in that time zone, and that can add value in your life, that will be a wonderful thing. And that was my vision कि यार मेरे को hundreds of million भारत की audience को impact करना है. I connected the dots कि यार this is something that can scale to hundreds of million lives. So वहाँ से connect किया था कि यार हाँ भारत की audience मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसा कुछ होना चाहिए. I can like मैं feel करना चाहिए कि यार ये actual में सही problem है और लोग इसको consume करेंगे. So from that I started audio. Or before us there was no non-music audio content actually. तो हमने actually वो जो 100 million जो English speaking जनता है उसको छोड़ा और बाकी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जो इंडिया की जो अपनी नेटिव लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलती है उसको पकड़ा. हमने हिंदी के अंदर स्टार्ट किया था सबसे पहले. और वहाँ से हमने धीरे धीरे सीखा कि यार कौन सा कंटेंट चलेगा, किस टाइप का लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट निकल के आया कि यार सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम होता है अदर इन वीडियो एंटरटेनमेंट. लेकिन ऑडियो के टाइम लोगों को नॉन एंटरटेनमेंट चाहिए क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं. कुछ तो उनको ऐसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ. तो छोटी चीज़ें सीखते गए एंड देन वी ट्रीटेड ऑन प्रोडक्ट्स एंड देन फाइनली वी रिस्ट कि यार हाँ वाह दिस इज समथिंग जो एक्चुअली लाइक लोगों को चाहिए. सो वी स्टार्टेड कुक एफएम इन 2018 और लाइक अभी तक की काफ़ी ऑसम जर्नी रही है. Super exciting. And can you tell us a bit more about what you have been able to achieve in the last 5 years in terms of scale? कुछ numbers जो share कर सकते हैं, right? Would love to know more about कितने languages में हम कर रहे हैं. After Hindi, what sort of languages you picked up and why? So it's been 5 years actually. We launched in June 2018. और first 2 years actually like I will say कि we were just figuring out PMF क्या कौन सा प्रोडक्ट चलेगा. मतलब first 2 years literally we did like hundreds of iteration on the platform कि क्या कंटेंट चलेगा, क्या वर्टिकल में चलेगा, क्या यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए, यूजीसी होना चाहिए, लो क्वालिटी चलेगा. वी डिड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स. इन अर्ली 2020 वी फिगर्ड आउट कि यार जो ऑडियो के कंटेंट है वो प्रीमियम कंटेंट चलेगा और इंडियंस को थोड़ा लॉन्ग फॉर्म सीरीज कंटेंट पसंद आता है. तो
till 2020 we were only in Hindi. We were doing these experiments. और एक्चुअली वो बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी होता है कि यू आर डूइंग मल्टीपल इटरेशन, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट क्या क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, यू लाइक यूजर से बात करते रहते हो कंटिन्यूसली. देन इन 2020 वी फिगर आउट द कंटेंट कि क्या कौन सा कंटेंट चल रहा है, नॉन फिक्शन मोस्टली एंड लॉन्ग फॉर्म सीरीज, प्रीमियम कंटेंट. तो ये हाई लेवल प्ले बुक कंटेंट के अंदर देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग द कंटेंट. और इन 21 वी लॉन्च मोनेटाइजेशन इन हिंदी. And to like we launched this subscription based monetization, and then in 2022 we launched 6 more languages. Today we are available in 7 Indian languages: Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi and Bengali. And today we have 2.7 million active paid users on Kuku FM. Just for context, we are the largest in audio category, and if you compare with other OTT platforms, then I think Netflix India have around 5 million active paid users. We have 2.7 million active paid users. So in last 2 years, we have like it's been rocket ship journey. Simply amazing, right? And अच्छा, like which brings me to another very interesting point, है ना, कि I think लोगों को बड़ा belief होता है कि भारत कस्टमर, इंडियन कस्टमर तो पैसे दे देता है, भारत का कस्टमर पैसे नहीं देता. राइट? आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैव broken that mindset shift, right? What are the sort of monetization experiments that you have conducted, and आपने क्यों बोला अभी तक आप एड्स नहीं कर रहे, इज द वे आई अंडरस्टैंड. Yes, yes, we are on a subscription based. Yes. राइट? सो एड्स क्यों नहीं कर रहे? बाकी दुनिया तो एड्स पे लगी हुई है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही हमारी टू फिगर आउट द मोनेटाइजेशन. तो पहले आई वांट टू क्लियर कि यार ये जो परसेप्शन है कि यार इंडियंस के पास मनी नहीं है, वो पे नहीं करते, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर आप उस रूट से जुड़े हो तो तुम्हें पता है कि यार इंडियंस, जो भारत ऑडियंस है, शुरुआत से 2 चीज़ों के लिए तो ऑलवेज पे करती आई है. एक है एस्पिरेशन, एक है स्टेटस. एस्पिरेशन होता है कभी मम्मी पापा का होता है कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, बच्चे को सरकारी नौकरी में भेजना है, या कुछ और एस्पिरेशन हो सकता है. लेकिन उसके लिए वो अपनी ज़मीन को भी बेचते हैं, घर को भी बेचते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं बिना सोचे समझे कि यार हाँ मेरे को अगर एस्पिरेशन है मेरे बच्चे को यहाँ पहुँचाना, तो दे ऑलवेज स्पेंड. एंड स्टेटस ऑल्सो दे स्पेंड, लाइक मैरिज हो गया एंड बाकी चीज़ों में हो गया. तो एक सो आई एम इन दिस स्टार्टअप वर्ल्ड फ्रॉम 2012. आई लाइक मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था इंटरनेट एडॉप्शन को भी. इन 2016, 17, 18 में एकदम जियो ने पूरा इंटरनेट एडॉप्शन बहुत ही खतरनाक बढ़ाया था. तो वहाँ पे एक बहुत ही यूनिक बिहेवियर चेंज भी आया इंडियंस के अंदर, दैट इज़ रिलेटेड टू एस्पिरेशन एक्चुअली. तो बिफोर इंटरनेट एस्पिरेशन बहुत लिमिटेड था, वही डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी जॉब. लेकिन इंटरनेट एडॉप्शन के साथ साथ में लोग ग्रेजुएट हुए और दूसरे एस्पिरेशन भी आना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने मल्टीपल छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी देखी. कोई अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो गया. कोई यूट्यूबर बन के सक्सेसफुल हो गया. किसी ने कुछ अलग तरीके से कर लिया. और लोग इतना इंटरनेट के ऊपर ये छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी देख के अपने आप अलग अलग एस्पिरेशन बनाना शुरू कर दिया. और बिकॉज ऑफ दैट एस्पिरेशन, जैसे पहले स्पेंड कर रहे थे उनके लिए, यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी बैंडविड्थ लगाना शुरू किया और वहाँ पे भी स्पेंड करना शुरू किया. दैट्स वाई पीपल लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एक्चुअली, और एवरीवन वांट टू लर्न, एवरीवन वांट टू ग्रो. और हम भी ग्रो कर रहे हैं. लाइक एवरीवन इज लुकिंग दैट कि यार आज मैं यहाँ हूँ, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है. तो आज कुकू एफएम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम होता है वो है पर्सनल फाइनेंस, हिस्ट्री, बायोग्राफी, पेरेंटिंग कंटेंट. जो लाइक 10 साल पहले कोई बिलीव भी नहीं कर सकता था कि यार पेरेंटिंग के लिए लोग कंटेंट कंज्यूम करेंगे, लाइक और उसके लिए पे भी करेंगे. पीपल आर पेइंग टू कंज्यूम दैट पेरेंटिंग कंटेंट कि यार मेरे बच्चे को मैं अच्छे से गाइड करूँ ताकि ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज फ्यूचर लाइफ. और ये भारत ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश वाली नहीं. भारत ऑडियंस पेरेंटिंग कंटेंट के लिए भी पे कर रहा है. तो और एक्चुअली हम शुरुआत से लाइक जब तुम सेकंड कंपनी चालू करते तो यार ऑलवेज कॉन्शियस किया आपकी बार तो कुछ ऐसा बनाऊंगा जो एक्चुअली में लोग यूज करते हैं, और उसका प्रूफ केवल तुमको यूजर ही दे सकता है. तो फ्रॉम डे 1 लाइक हमने ये कंपल्सरी कर दिया कि जो भी टीम में है डेली 2 या 3 लोगों से तो बात करेगा ही करेगा. लाइक और हमने एक्चुअली कॉल बटन होम पेज पे पुट कर दिया है, रैंडमली तुम सबको कॉल आएगा, यू हैव टू पिक द कॉल. तो
जब यूजर से बात करें तो ये सारी लर्निंग्स आई कि यार पीपल आर रेडी टू पे और कौन किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये सब सारी छोटे छोटे इनसाइट से फाइनली वी डिसाइडेड कि दिस इज द कंटेंट जो एक्चुअली लाइक प्रीमियम कंटेंट है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू यूजर्स और हम उनसे पूछ रहे थे क्वेश्चंस एक्चुअली, तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग थी हमारी. तो पहली कंपनी में हम क्या करते थे, जिस यूजर ने साइन अप या लॉगिन किया उसके डेटाबेस से नंबर निकाल के वी यूज टू कॉल. बाद में पूछते थे कि आपको क्या एजुकेशन में कमी लगती है, कहाँ फिक्स कर सकते हैं. आउट ऑफ 10 5 यूजर्स तो कॉल पिक ही नहीं करेंगे, और जो 5 पिक करेंगे उसमें से 2 तो तुरंत ही पिक कर देंगे, और जो 3 बात करते हैं 5 मिनट बाद में बोलेंगे भाई हो गया मैं बात नहीं करूँगा. लेकिन दिस टाइम हमने क्या किया, कॉल बटन पुट किया तो दे स्टार्टेड कॉलिंग अस. तो वो प्रॉब्लम कुछ कि यार ये कंटेंट कम है ज़्यादा है, या मेरे को प्रॉब्लम ऐप के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आस्किंग ए सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने खुद नहीं फिक्र रखे थे कि यार आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कमाता है, आप क्या आज तक किसी कंटेंट के लिए पे किया है क्या, कौन कौन से कंटेंट कंज्यूम करते हो, विल यू पे फॉर दिस कंटेंट. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया. वी हैड लाइक tens of thousand data points for that. So in some of the verticals we find out कि यार 80% लोग बोल रहे थे कि यार I am ready to pay for this content, क्योंकि ऑडियो नॉन म्यूजिक ऑडियो में कंटेंट था ही नहीं. और जब 80% बोल रहे हैं तो लाइक somehow you feel कि यार this is something जो एक्चुअली उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है. So that was a gut call actually finally कि यार हमको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या ये करना चाहिए. और गट सेड कि यार नहीं ये कंटेंट है बोल रहे हैं एंड वी कैन फील इट कि यार लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, एंड दिस इज द एस्पिरेशनल कंटेंट जो लोग पे करेंगे. एंड वी स्टार्टेड मोनेटाइजेशन इन जनवरी 21. इनिशियली लाइक 2% यूजर्स यूज टू पे. टुडे आउट ऑफ टोटल इंस्टॉल्स टोटल डाउनलोड्स 11% यूजर्स सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट होते हैं. वर्ल्ड वाइड एवरेज इज 3 to 5%. वी कन्वर्ट 11% यूजर्स इनटू पेड सब्सक्रिप्शन. For all the founders in the room, I think that's a instant takeaway, right? Find a way to connect with your customers in the fastest way possible, right? So that call your customer is an amazing innovation in that sense. That's the only thing that will be constant in every business. Like तुम first time हो सकता है कि फॉर्मो में आके स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट सेकेंड टाइम व्हेन यू नो कि यार एट द एंड बिजनेस विल बी ऑन आवर कस्टमर्स एंड यू कांट लाइक स्किप दैट. यू हैव टू टॉक टू एवरी डे टू योर कस्टमर्स. उनकी प्रॉब्लम समझना पड़ता है, देन फिगर आउट सॉल्यूशन फ्रॉम देयर. लाइक अदर थिंग दैट आई रियलाइज कि यार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. जैसे वी आर इंजीनियर्स, लाइक वी आर डेटा ड्रिवन पीपल, लाइक मोस्टली लाइक, एंड वी हायर ऑल्सो द सेम माइंड सेट पीपल. लेकिन आफ्टर टॉकिंग टू दीज लाइक सो मैनी यूजर्स आई ऑल्सो फिगर्ड आउट कि देर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट यू विल गेट सब्जेक्टिवली आफ्टर टॉकिंग टू दीज यूजर्स. लाइक तुम उसको डेटा से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते लॉट ऑफ टाइम. वो दैट डजंट मेक सेंस. तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये सेंस करता है, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, लेकिन यूजर क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा है. एंड समटाइम आफ्टर स्पीकिंग द यूजर्स, यार मेरे लॉजिकली आई कैन कांट एक्सप्लेन, बट यूजर को ये चाहिए. यू एक्चुअली बिल्ड दोज फीचर्स आफ्टर टॉकिंग टू the users. Otherwise you will like, अगर आप केवल डेटा ड्रिवन हो तो आधी पिक्चर ही पता है आप. नहीं, that's true. Being in the data business myself, I figured like जब भी कहानी और डेटा में फर्क होता है, usually कहानी सही होती है, डेटा गलत होता है. I mean, it's not that the data is wrong, but you're just reading the half the story. अच्छा, tell us more about the customers, right? And what sort of use cases they find, कहाँ पे opportunities मिलती हैं. For example, US में one of the first reasons why podcasts became popular is the long commute between home and work. इंडिया में ऐसे कौन कौन से opportunities और use cases और किस तरह के users वो opportunities खोजते हैं to listen to non-entertainment content? So एक्चुअली यूजर का जैसे डेमोग्राफी देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जिसको ये फील होता है कि मैं ऑफ द स्क्रीन टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो आता है आफ्टर 25. लाइक पहले बीच में हो सकता है कि तुम इट्स ओके या यू आर लाइक, अगर टाइम तुम्हें लगता है टिल 25 लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है. लाइक आफ्टर 25 यू बिकम द कॉन्शियस, और तो तुम यूज करते हो. हमारा जो बिगेस्ट जो एज ग्रुप है दैट इज 25 to 35. एंड उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट सुनते हैं
वो है वर्किंग क्लास, उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स, उसके बाद में आता है होम मेकर्स। क्योंकि इनकी लाइफ में जब तुम देखोगे ना, उनके जैसे शॉपकीपर, अब शॉपकीपर लाइक तुम लाइक टिपिकल शॉपकीपर को देखोगे, उसके बाद बहुत सारा टाइम होता है जब वो लाइक स्क्रीन पे कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑडियो में कंज्यूम कर सकता है। बहुत सारा टाइम होता है। स्टूडेंट की लाइफ में भी लाइक जो भी कॉन्शियस है, वो जब भी ट्रेवल कर रहा है या उसका बुक से हो गया भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, देन दे कंज्यूम इन द ऑडियो। एंड होम मेकर्स ऑल्सो लाइक किचन में तुम काम कर रहे हो, रिपीटेड टास्क कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंजम्पशन है। तो ये कुछ कुछ सिचुएशन है, जैसे कम्यूट हो गया, रिपीटेटिव टास्क है। और एक्चुअली 90% जॉब्स ऐसी हैं जो रिपीटेटिव होती है। लाइक 10% जॉब्स होने जहाँ पे तुम्हें फुल लाइक ब्रेन लगाना पड़ता है, वहाँ पे तुम अदर कंटेंट नहीं कंज्यूम कर सकते। बट मोस्ट ऑफ द जॉब्स लाइक तुम सिक्योरिटी गार्ड देख लो, ड्राइवर्स देख लो, लाइक शॉपकीपर्स देख लो, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर रिपीटेटिव जॉब्स। तो वहाँ पे उस टाइम विंडो के अंदर लोग ऑडियो में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। Super interesting. Now, the majority of the audience in this room are D2C brand founders and उनके लिए किस तरह की insights हैं और learnings हैं, the people who are trying to build for Bharat customers, what are the sort of insights, what are the sort of learnings that they can take away from your story on about Cuckoo FM? So one of the thing that I am sure कि कोई भी कंपनी हो, you can't skip content. Like आप कोई भी कस्टमर को ले लो, everyone is consuming content. Everyone, like अब वो वीडियो कंज्यूम कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, ऑडियो कर रहा है, that's a different story. But whatever the product you are making, चाहे वो physical product हो, कुछ भी हो, if you want to connect with that user, you have to create the content. अब like I have worked with some brands also कि यार अब उनकी अपनी स्टोरी होती है, but they have to create the content. So like audio is something जो अभी पिक कर रहा है. Like अभी तक अपने टेक्स्ट एंड स्क्रीन काफ़ी टाइम से कवर कर लिया ऑडियो के अंदर, सॉरी टेक्स्ट एंड वीडियो के अंदर. नाउ इज द टाइम कि पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग कंटेंट इन ऑडियो ऑल्सो. वन मोर फंडामेंटल थिंग जो अभी पूरा कंटेंट स्पेस में शिफ्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ AI. लाइक जो चैट GPT आपने सब लोगों ने सुना होगा, दैट इज लाइक वन ऑफ द वो पॉइंट आता है जब सब सारे सिस्टम्स चेंज होने लगते हैं. आई थिंक ओवर दैट टाइम, सो पहले मैं थोड़ा सा ऑडियो की हिस्ट्री भी दे देता हूँ. लाइक ऑडियो इज द मोस्ट नेचुरल कंटेंट फॉर्मेट फॉर एवरीवन. लाइक ऑडियो अपन बहुत लाइक 100,000 ईयर्स से हम ऑडियो में बात करते आए होंगे. 5,000 पहले अपन ने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया होगा. वीडियो इज वेरी रिसेंट कंटेंट फॉर्मेट. सो ऑडियो इज द लाइक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल द कंटेंट फॉर्मेट्स. तो आप ऑडियो को बहुत इजीली, लाइक ऑडियो इज द चीपेस्ट कंटेंट फॉर्मेट, जो आप चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट जो तुम क्रिएट कर सकते हो एंड हाई क्वालिटी में. उसके बाद में यू कैन कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, लाइक वो भी इजी है, और यू कैन कन्वर्ट इनटू वीडियो ऑल्सो, गिवन दैट कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है. सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ऑडियो विल बी लाइक फंडामेंटल फॉर एवरी कंपनी. क्या तुम स्टार्ट यहीं से करोगे एंड देन यू कैन चूज किया मेरे को लाइक टेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टेक्स्ट में कंटेंट डालना है. I will use some AI, chat GPT or video platform to convert into video also, and you can convert into 10 types of video. So I think like whatever the company, उनको content सीखना पड़ेगा. Plus content and media industry is the like एक साल में ही दो evolution आ जाते हैं. So you have to like चेक मार्क होता है ना कि यार हमको बहुत ही लाइक कैसे इवॉल्व हो रहा है, यूँ तुमको उसके साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी बिहाइंड. और कभी कभी इसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी भी आती है कि यू कैन ग्रो लाइक टुगेदर ऑल्सो. लाइक अब चैट GPT आ रहा है, इफ यू फिगर आउट सम AI सॉल्यूशन फॉर योर प्रोडक्ट और कंटेंट करने का मीडियम, देन यू कैन ऑल्सो ग्रो लाइक शोल्डर टू शोल्डर विद दिस जर्नी. तो या दैट्स वन ऑफ द इनसाइट क्या यू कांट स्किप कंटेंट एंड एवरी वन ऑफ योर यूजर लाइक इज कंज्यूमिंग द कंटेंट. अब उसका मीडियम अलग अलग हो सकता है, अब आपको उसको कैसे पहुंचना उस मीडियम को यूज करते हैं वो आपका चॉइस है. Super interesting. Now, what next? Right? I think
आपका विजन है कि यू वांट टू टच 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया, आपने उसमें से 2.5 मिलियन कर लिया. व्हाट नेक्स्ट? कहाँ तक जाएगी ये स्टोरी, और व्हाट आर द नेक्स्ट मूव्स फॉर कुकू एफएम एज अ ऑर्गेनाइजेशन? Yeah, so today we are available in 7 languages, and most of the content is in non-fiction. In non-fiction also there are 6 major verticals, personal finance, history, biography, parenting content, all these content formats. Now one of the interesting that we are working is courses. Like there are a lot of people, like the highest number of requests we are getting for courses ki yaar, can you please put this courses, or most of the students also are requesting कि यार ये इस कोर्स को भी ऐड कर दोगे क्या. तो अभी we started creating the content, but we know कि यार in audio like courses will be one of the big vertical. लोगों को like सीखना होता है या कुछ भी कोर्स हो, like तुम ऑलरेडी कंज्यूम करो वीडियो टेक्स्ट, लेकिन तुम्हारे पास थर्ड मीडियम में भी होना चाहिए जब भी आप कंज्यूम करना चाहते हो. तो that will be interesting thing. And one more innovative thing that we are working is कि यार हमारे जितने भी अच्छी क्वालिटी के content है उसको can we convert into videos also through using AI. Like this is something that is like innovative thing we are doing. We don't know कि वो crack होगा या नहीं होगा, but yes we are also working कि यार using other AI solutions can we, and like we will put multiple videos, like you can choose any video कि I want to see this actor or this voice. So you can choose and you can watch the video. Wow, next gen stuff already. Cool. I think that was, at least in this conversation, I think we have covered the majority of the topics. We have a few more minutes. Would love to open up the floor for any questions. Hi, my name is Rahul. So as you mentioned that, you worked with a couple of brands, could you maybe share, a success story where the brand could, kind of connect with their audience and kind of build maybe engagement or, drive sales? For example, there is a company, they are in the space of this blue collar jobs. So they started creating content for jobs, like how you can prepare for interview, what are the things you should know before going to the job, or how you can scale from this job to that job. There is one company that is in taxation space, tax and all this. They started creating content in that space, that how you can like save taxes, what are the things like जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए tax file करते time. So like in every vertical तुम content create कर ही सकते हो to educate your users. So these are 2 examples. There are multiple examples जिसके अंदर लोग अपने ही vertical के अंदर वो content create करते हैं, लोगों को educate करते हैं. Hi, Bisu. You mentioned how you create an environment of user research, very close user research throughout the organization. Any more tips on what founders like us, early stage founders with teams of 4, 5 people can do to create that culture and ensure कि team का हर member continuously user से बात कर रहा है, even potential customer से बात कर रहा है? So actually, I can still say कि यार this is not something जो लोग enjoy करते हैं. You have to like, I think this is something जो top down flow होता है. If founders are talking to the users, तो आपकी management team बात करेगी, management team बात करे तो नीचे बात करेंगे. लेकिन this is something जो कि ऐसा भी नहीं है कि यार एक बार आ गया तो you can like बाद में तुम आगे बढ़ सकते हो, लोग अपने आप करते रहेंगे. This is something that you have to continuously put effort and time also. And जैसे vision mission को तुम again and again reiterate करते रहते हो, same way you have to like, so your example कि you are also talking to the users and you have to like push your team to continuously talk to users. Like in last 5 years in the Kuku FM journey, like I still can say that this is not something कि लोग enjoy करते हैं. Like people want intellectual tasks, smart tasks, creative tasks, but talking to users, I feel everyone want to skip it. So you have to push it from top down. That's the only solution. So my question is simple.
अभी मतलब कंटेंट डेमोक्रेटाइज हो रहा है, कई कंटेंट जो है फ्री में मिल रहा है लोगों को आजकल, ठीक है। मतलब जैसे आईपीएल के लिए हम लोग पैसे भर रहे थे कल तक, लेकिन जियो सिनेमा के आने के बाद आईपीएल मैचेस भी हम फ्री में देख पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे डेटा भी जैसे 5G की तरफ हम जाएंगे और यूट्यूब वगैरह पे ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट स्ट्रीम्स है, जैसे जिस पे आप लल्लन टॉप वगैरह जहाँ पर आपकी भी ऐड चलती है, वो तो फ्री में कंटेंट बांट रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो या मोनेटाइजेशन आपने आज अचीव किया है, ये 1-2 साल के बाद फिर भी सस्टेन कर पाएगा, या कुछ और भी एवेन्यूज़ आप देख रहे हो जिसमें हो सकता है कंटेंट आपको फ्री में छोड़ना पड़े लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम्स कुछ और होगी? ओके, सो अभी जो हम देखते हैं वी सी ऑडियो एज ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, तो एंड वी हैव मल्टीपल वर्टिकल्स, तो लाइक ऑडियो काफ़ी वास्ट है हॉरिजॉन्टली, देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स, म्यूजिक इज़ वन ऑफ देम, लाइक म्यूजिक को स्किप कर दो, वी आर ए नॉन म्यूजिक प्लेटफॉर्म। और अब इसके अंदर मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल टाइप ऑफ मोनेटाइजेशन मॉडल भी हो सकते हैं। करंटली वी आर इन ए लॉन्ग फॉर्म सीरीज प्रीमियम कंटेंट, एंड वहाँ पे सबसे जो सही फिट बैठता है दैट इज ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। इन फ्यूचर इफ वी कैन ऐड लाइक मोर रोमांस कंटेंट, इंडिया में लोग फिक्शन के लिए नहीं पे कर उतना ज़्यादा पे नहीं करते हैं, एट दैट टाइम वी माइट थिंक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। इफ वी स्टार्ट लेट्स से कि लाइव कंटेंट लाइव इन ऑडियो, देन वी माइट थिंक यार हमको एडवर्टाइजमेंट या अदर टाइप के मॉडल सोचने चाहिए। बट येस, लाइक वी आर नॉट लाइक क्लोज किया बस यही करना है, वी आर ओपन फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। करंटली हमारा जो प्ले बुक है दैट इज लाइक प्रीमियम कंटेंट, एंड फॉर प्रीमियम कंटेंट लाइक दिस सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्क्स वेरी वेल, बट इन फ्यूचर इफ वी चेंज द कंटेंट टाइप then we might explore other type of monetization model also. This abhi, as I mentioned, currently we are working on courses. With courses we will try pay per piece model also, like you don't need to buy full year subscription, you can buy one piece of the content. So there are like different kind of monetization model you can try on your platform. इस पे two small bullet points just to add to that answer. I think access to UPI and the fact that you can start making recurring payments using API is a massive game changer, right? That's part one. Part two is also, interestingly enough, I don't know how many of you track the cash on delivery versus prepaid orders across various sectors, right? But still, even of course, e-commerce mein to that number still stands at about 30%. Even in recharges, right, Airtel and Jio, they still see about 30-40% of their prepaid numbers getting charged still through the old school scratch card method, right? Which means that, you know, even to touch those Bharat customers, you have to figure out various ways of making the payment process frictionless. Right, so it's also about figuring out, for example, for how do you pay for a Netflix, right, or Kuku FM by going to your Kirana store, right? So it's about innovating on also the monetization models, also the payment process itself. So just let me add one more interesting insight here. So this is the first time in India जहाँ पर तुम सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हो। आज तक पेमेंट इकोसिस्टम आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सपोर्ट ही नहीं करता था, लाइक द ओनली क्रेडिट कार्ड्स यूज्ड टू बी ऑन दैट सब्सक्रिप्शन वाला स्टाइल, अदरवाइज आपका बस वन टाइम ट्रांजेक्शन होता था। अभी विथ यूपीआई एंड विथ ऑटो पे इन यूपीआई, एक्चुअली यू कैन बिल्ड लाइक in any field, like you can create subscription platforms, और we have seen the difference जिसके अंदर like तुमको बार बार आके खुद को पेमेंट करना पड़ रहा है, और जहाँ पे तुम्हारा ऑटो पे है, इट इज़ लाइक गेम चेंजर इन ऑटो पे। लाइक यू ऑलवेज थिंक यार मैं यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दे सकता हूँ, यू डोंट वरी अबाउट कि यार मेरे को नेक्स्ट टाइम वापस उसको कुछ इम्पल्स देना है, वापस कुछ फोमो क्रिएट करना है, वापस कुछ मेरे को मार्केटिंग करनी है। दिस इज लिटरली गेम चेंजर। लाइक वी आर इन मोनेटाइजेशन जर्नी फ्रॉम 2.5 years. First year we used to onboard users without auto pay. Now we started like 90% users are on auto pay.
now we are working only for user experience. We are not working to like giving them some impulse or FOMO. So like if you can think some ideas jahan pe aapka like if you want to start any subscription business, like this is the best time to start any subscription company. And in last like say tier 4, 5, 6, kahin pe bhi chale jao, like everyone know about the UPI. And now people start getting educated also कि यार अगर मेरे को subscription kind of platform है, I will be on auto pay like. So this is like good time to start a. I have a question. Hi, I'm Vivek. I run a men's sexual wellness brand. As you rightly said, that there are a lot of experiences where people want a very personal sort of an approach, right? And you said that there are brands that are leveraging audio for that. So as a brand like myself, I also see 40% of my customers coming in from tier 2, tier 3 cities digitally, even through web conversion as well as lead gen. So what I'm trying to understand is, me as a brand, can I create content on Cuckoo, and what's the procedure for that? And as a creator, how can brands leverage Cuckoo? So our content creation is, so let me explain how content companies works for content creation. So there are 3 ways you can create content. One is UGC, like YouTube or Instagram. Anyone can create the content and anyone can consume the content. Second extreme is PGC, like professionally curated content, like Netflix, Hotstar. Only big publication, like studios work for them. And there is something in between. We are like in between. We have PUGC strategy. So PUGC is professionally curated user-generated content. Anyone can create the content on our platform, but we curate that content. We know that we want to only provide high-quality content to our users. So we have a checklist. We check that this is a like good title, good quality in the audio. There is no noise. In this like format is also long form series. We have those check marks. If your content like fits in our genre and these check marks, then we check mark it as a premium content. Then our users can consume the content. Like you can create the content on Cuckoo FM, but we will curate that content. That's the only layer we have. Cool. So we are out of time. But these were amazing questions. If there are any more, I think. So let's take this last question and then we'll sort of wrap it up. I think you're close enough to the mic. Speak up. Hi, I have seen a lot of content regarding Cuckoo FM as a brand on influencer-led platforms and influencer-led content pieces. What has been your key content strategy for influencer marketing as one of the funnels? Okay. So influencer marketing is one of our big growth channel actually. And I think every company have to figure out one unique growth channel to grow. Like you can't depend on other existing old channels. You have to somehow innovatively come up with a good channel. So what we figured out that, so we are a content company and we are in a different time zone. So people consume content on screen also and they consume off the screen content also. So we are not competing with screen time. What we figured out that we have content in this, like some particular genres, and people are consuming same content on screen also on these genres. And the biggest platform is YouTube. Actually, YouTube has more reach than WhatsApp in India. So what we did, we reached out to some good YouTubers and these creators who are working like, who have same genres, who have good influencer in channel on YouTube. And we connected our content to their content. Like, let's say some YouTuber is creating content on Gandhi Jayanti. So we have a Gandhi biography on our platform. So he will like create a 10-minute content. We will fit that content format in that like very nicely, and that worked very well. And like I will say like for us it worked very well.
and you also might think like some creative ideas on YouTube is the like biggest platform in India. So that's our hack. We connected dot to dot content, and we are fitting that. Like the user will not feel that it is something else. Like we talk about the same topic in that YouTube video also. Cool. Thank you everyone for your lovely questions. Thank you, Bisu, for your time. Thanks for inviting me.